Welcome to TopMaths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. 11 some students. If A minus 14 10 minus 10 B 6 minus 2 is given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts. 10 सम में हमने देखा कि सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हुए थे. यहां पे 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर. ये तो हमने लिए हैं फिगर ड्रॉ करके. So P, Q, R are the 3 points which divide segment AB in 4 equal parts. देखिए बच्चों, A having coordinates minus 14, 10, minus 10, B 6 minus 2, let P x1, y1, Q x2, y2, R x3, y3 divide segment AB in 4 equal parts. So, you know, AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RS. चारों सेगमेंट्स इक्वल हैं. बच्चों यहां पे चारों सेगमेंट्स इक्वल होने के कारण हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं. देखिए, आपको पता है अगर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB है, then this is RB. Then we can say Q is the midpoint of AB. You know A, you know B, we can find Q using midpoint formula. See, we'll say Q is the midpoint of segment AB. So, by midpoint formula, x2 is equal to क्या होगा? x2 is equal to minus 14 plus 6 upon 2 and y2 is equal to minus 10 minus 2 upon 2 minus 8 upon 2. x2 is equal to minus 4, y2 is equal to minus 12 upon 2. So y2 is equal to minus 6. तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए बच्चों minus 4 minus 6. आफ्टर दैट यू नो, अगर आपको q के कोऑर्डिनेट्स पता है minus 4 minus 6, using midpoint theorem or midpoint formula you can find coordinates of P. So P is the midpoint of segment AQ. By midpoint formula, x1 is equal to minus 14 minus 4 upon 2. Minus 14 plus minus 4 means minus 4 बच्चों upon 2. And y1 is equal to minus 10 minus 6 upon 2. x1 is equal to minus 18 upon 2. So x1 minus 9. And y1 is equal to minus 16 upon 2. So y1 क्या मिलेगा? minus 8. So P के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें बच्चों minus 10 minus 8. सिमिलरली देखो, P मिल गया, Q मिल गया, R चाहिए. R is the midpoint of QB. So see, R is the
midpoint of what? Midpoint of segment QB. Therefore, by midpoint formula, x3 is equal to -4 plus 6 upon 2, and y3 is equal to -6 minus 2 upon 2. So x3 is equal to, -4 plus 6 क्या होगा? 2. 2 upon 2, 1. y3 is equal to -8 upon 2, that is -4. So r के कोऑर्डिनेट्स मिल गए बच्चों 1, -4. तो लास्ट में हमें सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. देयरफॉर p क्या मिला? सॉरी, p कितना मिला था हमें? देखो, p -9 -8, q -4 -6, r 1 -4 are the required points of trisection. Are the required points. बस. ठीक है बच्चों, समझो? Clear? 12 some students. If A 20 10 B 0 20 are given points, find the coordinates of points which divide segment AB into 5 equal parts, 5 congruent parts. बच्चों 5 parts, 1 2 3 4 5. फिगर ड्रॉ किया हमने. A के कोऑर्डिनेट्स दिए, B के कोऑर्डिनेट्स दिए. We took 4 points PQRS which divides segment AB in 5 equal parts. See, A 20, 10, B 0, 20, P, Q, R, S are the points. Suppose P, Q, R, S are the points divides AB in 5 equal parts. Let P having coordinates x1, y1, Q x2, y2, R x3, y3, and S x4, y4. ये चारों कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढना है. बच्चों याद रखना, 3 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स रहेंगे या 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स रहेंगे तो पहले तो हमें एक रेशियो यूज करके एक पॉइंट ढूंढना है. डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं यूज करना है. बट इवन नंबर ऑफ पार्ट्स है, जैसे 4 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, तो हमें डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देखिए यहां पे वी नो एपी इज इक्वल टू PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SB is equal to let X. ठीक है बच्चों, हमने X ब्रैकेट में से. सो अगर मुझे AP अपॉन PB का रेशियो लेना है तो क्या होगा? AP अपॉन PB कैसे लिखेंगे बच्चों? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, which is equal to X upon X plus X plus X plus X, which is equal to X upon 4X. X कैंसिल, कितना होगा? AP अपॉन PB का वैल्यू मिला हमें 1 अपॉन 4. देखिए बच्चों, AP अगर 1 है तो PB ढूंढना है हमें. सॉरी, PB है अपना
n is equal to 4, right? So using these two values, we can find coordinates of P by section formula. See, by section formula, so m is to n is equal to 1 is to 4. By section formula, x1 is equal to 1 into 0 plus 4 into 20 upon 1 plus 4, which is equal to 0 plus 80 upon 5 x1, so which is equal to 16, and y1 is equal to, y1 क्या मिलेगा, 1 into 20 plus 4 into 10 upon 1 plus 4. So y1 is equal to 20 plus 40, 60 upon 5, which is equal to 12. So we got the coordinates of P, which are 16 and 12. समझे बच्चों? P के coordinates कैसे ढूंढने? उसके बाद ढूंढते हैं R, because see, P कितना मिला हमें? 16 and 12 मिला. हमें B पता है, so we can find R using midpoint formula. So by midpoint, उसके पहले हम लिखेंगे R is the midpoint of segment PB. Therefore, by midpoint formula, x3 is equal to 16 plus 0 upon 2 and y3 is equal to 12 plus 20 upon 2. देखो बच्चों, x3 is equal to 16 plus 0 upon 2 and y3 is equal to 12 plus 20 upon 2, midpoint formula. So x3 is equal to, आपको पता है 16 upon 2 कितना हुआ, 8, and y3 is equal to 32 upon 2, 16. तो r के coordinates क्या मिले? 8 and 16 students. 8 and 16. Again, Q is the midpoint of segment PR. क्या लिखेंगे देखो? Q is the midpoint of segment PR. So by midpoint formula, x2 is equal to, क्या होगा बच्चों? x2 is equal to 16 plus 8 upon 2 and y2 is equal to 12 plus 16 upon 2. So x2 is equal to कितना होगा? 16 plus 8, 24. 24 upon 2, 12. While y2 is equal to बच्चों 16 minus 12, 4. 4 upon 2, 2. So coordinates of Q are 12, 2. After that, think about point S. You know, point S is the midpoint of RS. RB, of segment RB. So by midpoint formula, क्या लिखेंगे? x4 is equal to 8 plus, देखो S midpoint है ना RB का, तो x4 is equal to 8 plus 0 upon 2 and y4 is equal to 16 plus 20 upon 2. So x4 is equal to 8 upon 2, 4 हुआ, और y4 is equal to 36 upon 2, 18. So S के coordinates कितने मिले? 4, 18.
सो लास्ट में बच्चों हमें सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. देयरफॉर पहले p के कोऑर्डिनेट्स. p कितना था अपना 16,12. q कितना था 12,2. r कितना था r 8,16. s क्या है 4,18. These are the required points which divide segment AB in 5 equal parts. Understood, students? Clear? In this way, we have finished practice set 5.2, students. Understood properly? हाँ बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था. यहाँ पे ये है 12 plus 16/2. एक्चुअली 28/2 आएगा 14. तो 14 यहाँ पे भी 12 14. So 16 12 12 14 8 16 4 18. These are the coordinates of required points. Understood, students? Clear? Thank you for watching Top Maths.